Very good morning. In the previous class, we was discussing about the menstrual cycle, है ना? Menstrual cycle को हम discuss कर रहे थे, and we come to know that the menstrual cycle is the nothing. It is the reproductive cycle of female primates. Female primates में जो reproductive cycle है, उसी को हम क्या बोलते हैं? It is called menstrual cycle, and it has an average interval of how much day? कितने दिन में repeat होती है menstrual cycle? 28. It repeats in 28 days. Day. Very good. So menstrual cycle is the reproductive cycle of primates, female, and it repeats after 28 days. Generally it repeats after 28 days, and during the menstrual cycle, when the ovulation occurs, the how many secondary oocytes are released? 1. Very good. So only one secondary oocyte is released during the menstrual cycle, during one menstrual cycle. Then during the menstrual cycle, a characteristic flow occurs in a female that is called menstruation or mensuration, which is commonly also called period. About the period we have also talked. It is a fluid that discharges from the reproductive tract of the female during menstrual phase of the menstrual cycle that contain blood, mucus, stripped endometrium, secondary oocyte and the certain WBCs also. So इस फ्लूइड की कंपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. We have talked about the medical terms that are used related with the menstruation, amenorrhea, oligomenorrhea and polymenorrhea. इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी. We have also discussed the two other terms. हमने दो other terms के बारे में भी डिस्कस किया था. If you remember, one is menarche, one is menopause. क्या कोई बता सकता है मुझे what is the difference between the menarche and menopause? So menarche is the first menstruation of a girl who just enters in the puberty, Okay. and menopause is the time period when a female when the menstruation in a female stops. Yes, it is the event in the life of a female when the menstruation stops due to the ovarian atrophy. Very good. Then we have talked about that the entire menstrual cycle, which is of 28 days, it can be divided into three phases. इसको हम तीन फेज में डिवाइड करते हैं. The first phase is the menstrual phase. This phase lasts for 3 to 5 days, and this is the phase due to the lack of progesterone, the endometrium strips and discharge with the help of blood, and secondary oocyte will also discharge, and this phase will only occur in absence of fertilization. ये phase सिर्फ fertilization ना होने की वजह से होती है. If the fertilization will occur, then the menstrual phase will not occur. That means menstrual flow will not occur. Then after menstrual phase, we have talked about the second phase that is called follicular phase. What was that? Follicular phase. As the name of this phase is indicating, this is the phase in which the main event is the development of the follicle. जो main event है वो follicle से ही related है. The follicle will develop. That means a primary follicle from one ovary will convert into a Graafian follicle through the secondary and tertiary follicle stages. And as the follicle matures, its number of follicular cells or granulosa cells will increase, and under the influence of FSH, the follicle develops and starts secreting the estrogen. तो जैसे जैसे follicle का size increase होगा, granulosa cells का number increase होगा, as well as उससे estrogen का secretion भी बढ़ता जाएगा. So ovary में क्या होता है follicular phase में? A primary follicle develops into a Graafian follicle, and that Graafian follicle secretes the estrogen hormone. Can you tell me which hormone from the pituitary is responsible for the development of follicle? Which hormone from the pituitary is responsible for the development of follicle? Follicular stimulating hormone. It is So follicular FSH. stimulating Very good. hormone. It is FSH. It is responsible for the development of follicle. And secondly, it is also responsible for the secretion of estrogens from the developing follicle. Now these are the ovarian events.
Now this estrogen will work on the uterine endometrium. ये estrogen किसके ऊपर काम करता है? Uterine endometrium के ऊपर काम करता है, and it cause the healing and proliferation of uterine endometrium. So this is the characteristics events that you could see in the follicular phase. During the entire follicular phase, the level of FSH and LH it increase gradually. धीरे धीरे FSH और LH का level increase होता जाता है, and in the mid cycle that means 28 दिन की cycle है, तो mid cycle means that means around 13th to 14th day, the level of FSH and LH both are at peak. FSH और LH दोनों का level peak पे होता है, and in that mid cycle from the anterior pituitary there is a rapid release of LH. We use a term for this rapid release of LH from the pituitary in mid cycle. इसके लिए हमने एक term use करी थी, क्या कोई term बता पाए? Ovulation. No, ovulation is a different term which is related with this phenomena, but we use a term for the rapid release of LH from the anterior pituitary in the mid cycle, and that term was LH surge. What was the term? LH surge. And this LH surge caused the rupture of Graafian follicle. इस LH surge की वजह से क्या होता है? Rupturing, or you could say ruptured Graafian follicle. And as the Graafian follicle ruptured, it released secondary oocyte. Secondary oocyte ovary से release हो जाएगा, and this entire phenomena due to the LH surge, the rupturing of the Graafian follicle and release of secondary oocyte, it is called, what it is called? Ovulation. It is called ovulation, and it occurs at the 14th day of menstrual cycle. ये menstrual cycle के 14th day पे होने वाला phenomena है, and after the ovulation the follicular phase completes. Follicular phase यहाँ पे आपकी complete हो जाती है. Because in the follicular phase the hormone. Sir. Yes. Sir, in the menstrual phase, if a girl menstruate for more than 5 days, then it is a problem, or it's just normal. More than 5 days, it means around 6 days. It is okay, but more than So 6 days. 7 to 9. No, then the girl should consult a doctor. It is not normal. Okay? It is a case of polymenorrhea, and the girl should consult the doctor because the girl may have some UTI infection, urinary tract infection. Okay? So these are the first 2 phases of the menstrual cycle. Not for this. Yes? So, but it's not for the every month. It's just for 1 or 2. Yeah, the girl should, as I told you, beta, because it is related with the reproductive system, so it is a significant thing. Because a normal menstrual cycle can exist for 3 to 5 days. थोड़ा हम वेरिएशन लगा के हम कह सकते हैं कि 6 डे तक जा सकता है, बट अगर 6 डेज से ज्यादा हो रहा है तो देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. Got it? Yes, sir. Okay. So after this. And sir, what is PCOD? Yes. So what is PCOD? Polycystic ovarian disease. Polycystic ovarian disease is a condition when due to the ovarian inflammation, ovarian infection की वजह से ओवरी के अंदर फाइब्रस सिस्ट डेवलप होने लगते हैं. दैट मीन्स एंडोमेट्रियम खत्म होने लगता है, एंडोमेट्रियम की जगह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की सिस्ट बनने लगती हैं. दिस काइंड ऑफ फीमेल फेल्स टू मेंस्ट्रुएट. ऐसी फीमेल में एंडोमेट्रियम जब होगा ही नहीं तो साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम नहीं होंगे. दैट मीन्स उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत कम या लगभग ना के बराबर होगा. एंड दिस काइंड ऑफ फीमेल, अगर ये कंडीशन और ज्यादा सेवियर हो जाए तो दिस काइंड ऑफ फीमेल बिकम इनफर्टाइल. ओके? Okay, sir. Infertile. Yes, sir. Because in the follicular phase, come back to the topic, because in the follicular phase the main hormone which is causing the changes in the uterus की healing और proliferation कौन सा हार्मोन करा रहा है? It is estrogen. So thus it is called estrogenal phase. इसको हम estrogenal phase भी बोलते हैं. So after the first 2 phases of the menstrual cycle, now in this class we are going to start with the third phase. Can you tell me the third phase of the menstrual cycle?
The first one is the menstrual phase, second one is the follicular phase, then what is the third phase? The first phase is the menstrual phase, the second phase is the follicular phase, then what is the third phase of menstrual cycle? It is Luteal phase. it is the called luteal Luteal phase. phase. अब ल्यूटियल फेज में होता क्या बेटा, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये डायग्राम आप लोग पहले भी देख चुके हो. दिस इज द सेक्शन ऑफ ओवरी. फर्स्टली व्हाट हैपेंस इन द फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में ये हमारी जो प्राइमरी फॉलिकल थी, सिंगल लेयर्ड फॉलिकल, इट कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल, दैट मींस डबल लेयर्ड फॉलिकल. Then this double layered follicle converts into a tertiary follicle that has a characteristic cavity in it. That cavity is called antrum and filled with a fluid called liquor folliculi. And then this tertiary follicle converts into the Graafian follicle. ये tertiary follicle किसमें convert हो जाती है? Into the Graafian follicle. Graafian follicle have the primary oocyte, zona pellucida, corona radiata, and membrane granulosa. Then at the 14th day, what will happen? This Graafian follicle protrude on the surface of ovary and then get ruptured हो जाएगी, and as a result of rupturing of Graafian follicle, the secondary oocyte is released outside the ovary. Ovary के बाहर secondary oocyte को release कर दिया जाएगा. Now it will be received by the fimbriae and then transported to the fallopian tube. इसको fimbriae receive कर लेंगे, fallopian tube में transfer कर दिया जाएगा. Now अब ovary के अंदर क्या बचा बेटा? This is the remnant of the Graafian follicle. These are the remaining part of the Graafian follicle, and at 14th day to 14th to 28th days, the next phase that begins, that is the luteal phase. अगली फेज जो शुरू होती है वो है ल्यूटियल फेज, एंड द मेन हार्मोन विच कंट्रोल्स दिस फेज इज द एलएच हार्मोन. एलएच सर्ज हमारे 14th डे पे हो ही चुका था, एंड एलएच सर्ज इज द पीक लेवल ऑफ एलएच. So under the influence of LH, the Graafian follicle ruptured and released the ovum, and under the influence of this LH same, the remnant of Graafian follicle converts into a temporary endocrine gland called corpus luteum. It is a yellow color gland. So LH के इन्फ्लुएंस में ल्यूटियल फेज में ये जो रिमेनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दिस टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इज योर कॉर्पस ल्यूटियम. Is it clear? Is it clear or not? No, sir. Yes, sir. सिंपल सी चीज है, जब फॉलिकल रप्चर होगी तो एग तो बाहर निकल गया, सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया, जो बचा कुचा हिस्सा है एग का, सॉरी ग्राफिन फॉलिकल का, अब आगे की फेज में एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Now Yes, sir. this corpus luteum is a temporary endocrine gland, that means it secretes a hormone. The hormone which is secreted by the corpus luteum, it is called progesterone. Progesterone. Okay. At 15th day, the conversion of the remnant of the Graafian follicle starts into the corpus luteum, and around 21 to 28th day, 21वें से 22वें दिन तक corpus luteum पूरी तरीके से बन चुका होता है, और वो क्या सिक्रेट करना शुरू कर देता है? प्रोजेस्टेरोन. एंड दैट इज व्हाई इन द ल्यूटियल फेज यू कुड सी कंटिन्यूअस राइज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि 14th डे तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल लो है, बट 14th डे के बाद जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना और मैच्योर हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होता चला जाता है. देन दिस प्रोजेस्टेरोन is a hormone that works on the uterine endometrium and cause the proliferation of uterine endometrium. यूट्रस की जो वॉल है उसको और ज्यादा थिक कराता है. प्रोलिफरेशन मींस थिकनिंग.
थिकनिंग के साथ क्या क्या होगा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स हैं दे विल बिकम enlarged, the glands inside the uterine endometrium they will also develop and enlarge. That means the uterus is completely getting adapted to nourish the implanted fetus. uterus पूरी तरीके से तैयार हो जाता है किसके लिए, implanted embryo को nourishment provide करने के लिए. Is it clear? So these are the two main events. In the ovary, under the influence of LH, the remnant of Graafian follicle converts into corpus luteum, and in the uterus, under the influence of progesterone, the uterine endometrium further proliferate and become thick and enlarged. Is it clear? Yes, sir. अब बात समझने की आ जाती है बेटा, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको हम Cl से भी रिप्रेजेंट करते हैं, it has a independent life of 28th day. That means corpus luteum independently बिना किसी चीज के सहारे के 28th डे तक सरवाइव कर सकता है, एंड देन आफ्टर 28th डे इट विल डीजेनरेट. 28वें दिन के बाद ये डीजेनरेट हो जाता है. फॉर द फर्दर सर्वाइवल, दैट मींस 28th डे के बाद भी अगर कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करना चाहता है, सो इट रिक्वायर्स अ हार्मोन कॉल्ड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा. कहां से सिक्रेट होता है हार्मोन? इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा. दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, 14th डे पे एग रिलीज हुआ, 17th डे तक फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो बड़े आराम से 28वें दिन तक प्लेसेंटा बन जाएगा. प्लेसेंटा बनने की वजह से ब्लड में HCG होगा और उस HCG की हेल्प से कॉर्पस ल्यूटियम 28वें दिन के बाद भी सर्वाइव करेगा. दैट मीन्स प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली ब्लड में बना रहेगा, जिससे यूटेराइन चेंजेस एज इट इज मेंटेन्ड होते रहेंगे. दैट मीन्स वो एज इट इज थिकेंड होता ही चला जाएगा. बट इफ द फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28वें दिन तक तो बना रहेगा, बट क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्लेसेंटा नहीं बना है. प्लेसेंटा नहीं बना है, दैट मीन्स HCG नहीं है, तो 28वें दिन के बाद this corpus luteum get degenerate, it get degenerate, and जैसे ही corpus luteum आपका degenerate होता है, simultaneously the level of progesterone fall in the blood, progesterone का level blood में fall हो जाता है, and as the progesterone's level fall, आपको पता है progesterone is a hormone that maintains the uterine changes. जब maintain करने वाली एजेंसी ही नहीं रही है तो uterine endometrium start stripping, स्ट्रिप होना शुरू हो जाती है, एंड द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज बिगिंस. सो मेंस्ट्रुअल फेज का कारण क्या हुआ? 28वें दिन पे कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेट होना, जिससे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप करता है. प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप करता है तो ऑटोमेटिकली यूटेराइन एंडोमेट्रियम स्ट्रिप होकर निकलना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाती है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Is it clear or not? Clear. Okay, beta. So these are the three phases of menstrual cycle. In this entire process, you could see the ovarian hormone and the hormones from your pituitary. They are playing a very important role. The pituitary hormone are the FSH and LH, and the ovarian hormone are the estrogen and progesterone. They are causing these cyclic changes in the uterus as well as the ovary, and thus these all are collectively known as menstrual cycle. So this is all about the menstrual cycle that we have discussed in this class. Now